Okay, guys, let's move forward with another video जहाँ हम देखेंगे how we can just start how we can just use that volumes in a particular real life based applications and उसकी requirement हमें क्यों पड़ी है तो वो भी हमें पूरा अच्छे से समझेंगे बट उससे पहले हमें एक ऐप बेसिक ऐप की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ हमें देखना होगा कि एप्लीकेशन कुछ कोड और एनवायरनमेंट मिले और टेम्परेरी डेटा एंड एज अ परमानेंट डेटा मिले जो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में गो थ्रू करके बताई थी. Okay, so the Docker, how these are maintained and all. So basically, the application is maintained by the images you know very well, and the temporary app data, like all the data is that should be stored in a container. Then you can say you can just read and write that data as well, right? And like the permanent app data should be stored in somewhere, right? Like in the volumes and so in this case I developed a basic Node, Node.js application. So app.listen, that which is on port number 80, and mm, that basically creates the basic files that taking the titles and content the data and should be in a lower cases. And just I use the FS library to store that data uh, in a okay in a feedback for folder. So this is the permanent data which is stored. Okay, we'll look at during the running of their project. So in this video just going through about the code. So what we are going to use in the next videos. Okay, so the basically that which is rendering the feedback html html data which is static data on the public folder जो मैंने यहाँ पर एक basic ओके सो बेसिकली मैंने यहाँ फीडबैक एच टी एम एल बना रखा है सिंपल और एग्जिट्स एच टी एम एल भी बना रखा है एज अ पार्ट ऑफ दैट. सो यहाँ पे मैंने वो रेंडर करा रखा है अकॉर्डिंग टू द राउट्स और ये क्रिएट बेसिकली एक क्रिएट पर्टिकुलर एपीआई है जो कॉल करेगा और ये टेम्पररी डेटा भी स्टोर कराएगा एंड लाइक परमानेंट डेटा दैट विल स्टोर इन ए फीडबैक एज वेल एज. ओके सो या so this is on the basis of that video. So the main thing is that I just explaining the how this is the working that the use of the volumes in that case. Okay. So yeah. Okay. So yeah, is explaining most of the about in this video for the project updations, and you can just code with me as well as regarding out there. So that's basically that maintenance that the particular website. Okay, so in the particular note application जो हम टाइटल्स और डॉक्यूमेंट स्टोर करा रहे हैं और हम देखेंगे कि हाउ वी कैन जस्ट हैंडल दैट परमानेंट डेटा if the images and in the docker or volumes की क्या requirement आ गई in this case. So you can just create on your own application accordingly जो मुझे जो जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने इस वीडियो में बता दी. अगली वीडियो में हम देखेंगे कि complete use case of this. Okay, so thank you so much for watching this video.